Assalamu alaikum students, how are you all? Today the topic is migration of birds. That is also very important topic related to the bird point of view. Migration, it is actually the movement of organism from one part to the other. Actually that is for the feeding purpose or for the nestles area, okay? Migration has been defined as the periodic swing of an animal population. There is the migration of overall organism, overall population. That may be the fish population, that may be the bird population. So all the organisms which are moving for the feeding purpose, for the homemaking purpose, that organisms are included in the migratory organisms. The migration may be temporary or it may be permanent, right? ये migration temporary भी हो सकती है और permanent भी हो सकती है. कैसे टेम्पररी एंड हाउ इट इज टेम्पररी एंड परमानेंट. इट मीन्स दैट कि आपके पास अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट कर रहा है या माइग्रेशन कर रहा है और दोबारा वापस नहीं आ रहा, देन इट इज परमानेंट माइग्रेशन. बट when the organism is coming back to its original place, then it is for the temporary reasons, okay? It is a regular movement, either it is annual or seasonal. ये annual भी हो सकती है और seasonal भी हो सकती है, right? अब आपके डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनुअली बिहेव कर रहे हैं, एनुअली माइग्रेशन कर रहे हैं या सीजनल माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? Of birds from its breeding place to a non-breeding place, either for obtaining the food and shelter or to pass the unfavorable climate. अब ये अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो सकती हैं. ऑर्गेनिज्म या तो बहुत ज्यादा ठंड थी, विंटर थी, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से बर्ड माइग्रेट कर गया. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा विंटर्स हो या बहुत ज्यादा समर हो या गर्मी बहुत ज्यादा हो तो हम ठंडे इलाकों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन वो हमारी टेम्पररी माइग्रेशन होती है, राइट? सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ फूड, शेल्टर, और मे बी बिकॉज के वहां घर बनाया जाए, परमानेंटली नेस्ट्स बनाए जाए. Now, groupism in birds. Majority of birds have a habit of moving in the form of groups from one region to another on the change of season. That is very easy point कि birds जो हैं वो अपनी groups की form में move करते हैं और ये एक region से दूसरे region में जाते हैं. The moving birds are called the migratory birds. The remaining birds do not migrate at मतलब कुछ ऐसे birds भी हैं, the moving birds that are migratory, the remaining birds do not migrate at all, and these are called the resident birds. They will not move, they are the residents of there. ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, बीएससी वाले एमसीक्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. मैं आपको बता दूं, जब आप पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन से पहले मास्टर्स लेवल पर MCQ based टेस्ट होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू मेमोराइज द MCQs, ठीक है? अगर बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ रहे तो आपकी एडमिशन के टाइम पर, फर्दर एजुकेशन के टाइम पर आपकी जो है MCQs काम आते हैं. दैट इज व्हाई आई एम फोर्सिंग you all to memorize the MCQs also. That is the resident birds and that is the migratory birds. In migratory birds, some of the birds migrate from only a few miles, right? While some birds migrate from thousands of miles. कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही few miles travel करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो 1000 miles भी travel कर सकते हैं. Some cover 11,000 miles, some cover 8,000 miles, while some covers 600 miles, right? Now the type of migration. What is the type of migration? Each migratory bird leave a warmer climate or a zone to breed in the cold climate. कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ. द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन डिफर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन द माइग्रेशन इज डिफरेंशिएटेड इनटू
The differentiation of migration is on the basis of the direction in which the organism is moving, right? It includes the migration, latitudinal or vertical migration. Why we are saying it is latitudinal or vertical migration? It includes the migration of birds from plains to hills, यानी नीचे के इलाकों से ऊपर के इलाकों की तरफ, from breeding and nestling, for breeding and nestling. But during winter, when the north is covered with snow, they return back फॉर द शेल्टर, ठीक है? जब विंटर्स होंगी, नॉर्थ जो कि नॉर्थ कवर्ड हो जाता है स्नो से, यानी ये बर्ड्स जो हैं प्लेन एरिया से हिल्स की तरफ मूव करते हैं, इनकी माइग्रेशन होती है. लेकिन विंटर में जब नॉर्थ कवर होती है स्नो से, तो ये दोबारा से वापस आ जाते हैं. दे रिटर्न बैक फॉर द शेल्टर. फॉर एग्जांपल, द साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट इन इंडिया and Pakistan. This type of migration takes place in north-south direction or south-north direction. Right? आपने अपने सामने direction रखनी है north, south, east, west. Right? Then you have to understand that Siberian birds India and Pakistan में movement करते हैं, और ये migrations जो हैं वो north-south direction की तरफ करते हैं. North south directions की तरफ, right? This is the latitudinal or vertical direction, as it is vertical in axis, vertical in direction, ठीक है? एक होती है horizontal, एक होती है vertical, ठीक है? The longitudinal migration, in this type of migration the birds move in the east west and west east direction or from mountain parts to the plain. अब ये longitudinal वाले mountain से plain की तरफ आ रहे हैं, और इनकी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है या वेस्ट ईस्ट है, राइट? एंड बेसिकली दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, एंड east and west directions from the mountains to the plains during summer for breeding and nesting, and return to the mountains back in the winter. That is very easy topic. That is also very important. Classification of migratory birds. Now we classify the migratory birds on the basis of summer, winter, या summer visitors होंगे या winter visitors होंगे. These migrate from the warmer southern part to the comparatively colder northern parts in spring for breeding and nestling, and return to the southwards to their natural haunts in later summer or autumn. क्या होगा कि ये समर विजिटर्स हैं. समर विजिटर्स जो हैं वो क्या करेंगे आपके पास कि साउदर्न पार्ट्स टू कंपैरेटिवली कोल्डर नॉर्दर्न पार्ट्स, समर को छोड़ के, समर रीजन्स को छोड़ के थोड़े से कोल्डर रीजन्स की तरफ चले जाएंगे इन स्प्रिंग फॉर द ब्रीडिंग एंड नेस्टलिंग पर्पस, right? And return to the southwards to their natural haunt. बस दोबारा से, यानी that is the type of a temporary migration. Okay. Winter visitors, these migrate southwards and southwestwards, that is to the warmer parts in the winter, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों से ये क्या करेंगे, ये winter visitors हैं, and return northwards in the spring. These migrate southwards and southwestwards to the warmer parts in the winter. जब सर्दियां हैं तो ये थोड़े से वार्मर इलाकों की तरफ चले जाएंगे. ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके इलाकों में सर्दी थी, ये गर्मी में चले गए. सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो विंटर में विजिट तो कर रहे हैं लेकिन गर्म इलाकों की तरफ. ठीक है. Birds of passage. Certain birds, while migrating northwards or southwards, drop in their way for a short period of time for rest and relaxation or food. They are seen for 1 or 2 days while relaxing. These are called the birds of passage. There are some birds that will stay in a certain period of time, for a certain period of time in a certain place. Rest भी हो सकती है, relaxation भी हो सकती है. Maybe they are tired, they are taking rest out there for temporary purpose. Partial migrants. In certain cases, all the birds of a group do not leave the native land. Right?
but some individuals or birds remain in the native land. Such birds are called the partial migrants. They are partially migrants. The partial migrants travel for some distance and then return back to the native land. That is so easy. आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने नेटिव लैंड में रह रहे हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी देर तक माइग्रेशन करेंगे और अपने नेटिव लैंड की तरफ दोबारा से रिटर्न होंगे. रूट्स ऑफ माइग्रेशन. Now, what are the routes? What are the ways? What are the pathways? Sea routes. Marine birds follow the sea routes. Marine birds, they follow the sea routes. Coast routes, the coast routes are used as a highway by a number of migrants. There are East Atlantic coastline, West Atlantic coastline, and East Pacific coastline. These all are the coast routes which are followed by the birds, and they are actually the classification on the basis of routes of the birds. River valley route, while moving from plains to hills and from hills to plains, यानी plains से hills के दरमियान और plains से hills और hills से फिर plains, the migratory birds ये जब जा रहे होते हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं. ये रिवर्स को क्रॉस करेंगे, वैलीज को क्रॉस करेंगे, बाज़ औकात कभी कभी वैलीज में रेस्ट भी कर लेंगे, जैसे हमने पार्शियल माइग्रेंट्स को देखा, पैसेज बर्ड्स को देखा. माउंटेन रेंज, वेरी रेयरली द बर्ड्स क्रॉस द माउंटेन रेंज. बहुत ही कम ऐसा होता है जो बहुत ही मस्कुलर हो तो वो बर्ड्स माउंटेन रेंज को भी पास कर सकते हैं. ईगल की एग्जांपल लोग देते हैं कि दैट इज द वेरी मस्कुलर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ अ बर्ड. Velocity. What is the velocity? What is the speed when the bird is migrating from a certain region to the other region? What would be the velocity of that bird? What would be the speed of that bird? The velocity of flight varies from individual to individual. Of course, अगर individual जो है वो powerful है, muscular है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. स्पीशी टू स्पीशी भी वेरी करता है. सम फ्लाई विद अ लिटिल स्पीड ऑफ 30 miles per hour. They are giving the example of crow, that is a little low speed, but some with a great speed, that is 38 miles per hour. The maximum speed recorded so far is 170 per 200 miles. That is by the Indian Swift in India by E.C. Stewart. That is the bird which is considering as the most maximum speed showing bird. But this speed is also affected by the direction of air. यानी आपके पास वेदर काउंट कर रहा है इस चीज में. वेदर अगर हार्श होगा यूजुअली बर्ड्स फिर माइग्रेशन करते नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं. स्नोफॉल है, एयर ज्यादा है, राइट. Order of migration. During migration, the bird follow a definite order and this order is strictly followed, right? Birds are more आप कह सकते हैं कि they are more particular during the migration. ये एक order follow करते हैं, ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं, ये order follow करते हैं, right? Usually the adult migrate first and are followed by the youngs. Adult जो है वो आगे की तरफ होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनके या जो यंग वंस होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं बैक साइड. ठीक है. But during migration back, the young ones migrate first, adopting the route which was followed by their parents, and the adult follow back the youngsters. We are saying कि आपके पास ये जो youngsters हैं जाते वक्त तो adult को follow करेंगे लेकिन आते वक्त ये वही route लेंगे जो उनके parents ने उनको सिखाया था. In adults, the male follow first, followed by the female adult. देखिए नेचर ने हमेशा मेल को जो है ना वो अथॉरिटी और हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सो मेल विल फॉलो फर्स्ट एंड देन फीमेल एंड देन दी लिटिल यंगर वन and then the next in order of age, and the end comes the weak and the wounded one, right? Majority of birds start during the night and if they pass by the day it is above the range of the human vision. Wow.
that is above the range of human vision. ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं कि it is not under our vision. ठीक है. Then the altitude of the flight. Some of the birds fly quite close to the earth while most of them, ठीक है, most of the routine migration takes place within 3,000 feet from the earth. Radar has shown some small birds migration at night fly at 5,000 to 14,000 feet height. यानी ये हमारी विजन से बहुत दूर है. इसके लिए, इसकी मालूमात के लिए रडार की हेल्प ली जाती है और देखा गया कि रडार जो है वो आपके पास ये जो बर्ड है 5,000 फीट हाई भी जा सकता है, 20,000 फीट भी हाई जा सकता है. इवन दे कैन क्रॉस द हिमालयाज, राइट. Regularity of migration. Regularity, in spite of abnormal weather, migration of birds occur every year without failure, with only a difference of day or two. यानी इतनी ज्यादा इनमें रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है. बर्ड्स से हमें सीखना चाहिए कि ये अपनी माइग्रेशन जिस टाइम पे है डे और 2 के लिए डिले हो जाएगा, लेकिन ये अपनी माइग्रेशन कॉन्टिन्यूस रखते हैं. ठीक है. Regulatory birds, in spite of abnormal weather, migration of birds occur every year. अगर जितना भी आपके पास weather जो है वो harsh है, ये अपनी migration within year तो करते ही करते हैं. Also, the migrants always follow the same route, right? That is very easy. Way finding और navigation. Navigation आप कैसे कर सकते हैं? Navigate कैसे कर सकते हैं? ठीक है. Way of finding or navigation means the question is how the birds navigate or find their way. That is very important question. This question comes to our mind: how the birds navigate, how they find their way. Various explanations or theories have been given. So there are some theories. Now we will study the theories by visual landmarks. A class of ornithologists think that the route or direction of migration is attributed to clear tropical features or landmarks such as great rivers like Indus, river valleys, coastlines, chains of oceanic islands, mountain ranges, etc. कहते हैं कि ornithologists जो कि birds की study करते हैं, उन्होंने सोचा कि ये जो डायरेक्शन है माइग्रेशन की, ये टोपोग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं, ये निशानियां रखते हैं अपने लिए. ठीक है. मोरओवर बर्ड्स क्रॉसिंग ग्रेट सी ड्यूरिंग माइग्रेशन, देयर आर नो सी मार्क्स फॉर देम टू फॉलो. बाय एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि दे विल फॉलो और नेविगेट और फाइंड द रूट बाय एक्सपीरियंस. Suggest that the birds learn by experience. Some older members benefiting by the tradition follow. जिस तरह हम कहते हैं, हम अपने बड़ों से सीखते हैं, फिर हमारे बड़े छोटों को सिखाते हैं और फिर छोटे उनसे छोटों को सिखाते हैं. ठीक है. तो these are the ancestors, our ancestors. We follow our ancestors. Similar is the case with the birds. They will learn from their traditional ancestors, traditional birds. By the air currents, some scientists suggest that use of some special currents which lead them to their destination, right? By homing instinct में भी ये इनकी चीज होती है. By Earth's magnetic field, some of the ornithologists suggest that use of Earth's magnetic field, which is directed by the inner ear in migration. Actually, they have the inner ear, and that is in their instinct, that is in their, मतलब ये लोडेड है कि ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट करते हैं इनके ईयर्स और वो ये माइग्रेशन करते हैं. यूज ऑफ सन को भी एज अ नेविगेशन या एज फॉर अ फाइंडिंग प्लेस यूज कर सकते हैं एज अ टूल. यूज ऑफ स्टार्स. Another German friend suggests that nocturnal migrants navigate by knowing the position of the stars. However, the conclusion that the birds navigate while day or by using the sun and the night by the stars creates many questions. कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा questions mind में arise हुए कि इनकी जो origin है, इनका जो navigation है, अभी तक भी इस पे रिसर्च हो रही है और ये क्यूरियोसिटी है इस बारे में. कुछ कहते हैं कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से, कुछ कहते हैं कि ये सन को फॉलो करते हैं, स्टार्स को फॉलो करते हैं. There are so many theories giving related to the navigation and finding the place. Causes of migration. माइग्रेशन में आपके पास क्या कॉज हो सकता है?
जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे गोनेड्स में चेंजेस आती हैं, फीमेल गोनेड्स, मेल गोनेड्स, इट इज सेड दैट द राइपनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन द बर्ड कॉज द फिजियोलॉजिकल चेंज। तो राइपनिंग, गोनेड्स की राइपनिंग जैसे ही होगी तो उनको पता चल जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ब्रीडिंग के लिए कर रहे थे, तो इनकी सेक्स ऑर्गन्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये साइन मिलेगा, ये सिग्नल मिलेगा कि इन्होंने अब क्या करनी है, माइग्रेशन करनी है। दीज आर द कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलस भी, जैसे हीट हो सकती है, वार्म हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड से the hormones secreted by the thyroid gland relate the metabolic activities of the bird at the time of migration. The thyroid gland produce necessary changes in the metabolic activities which come. अच्छा, ये thyroid gland की जब secretions होंगी तो ये ऐसी metabolic activities, ऐसी changes लाएगा कि bird को compel करेगी कि वो migrate करे. Secretion of the pituitary hormones. The secretion of pituitary gland regulates the migration. यानी आपकी जो बर्ड हैं उनके जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं ये इनको कंपेल करेंगे कि ये क्या करें, माइग्रेट करें। द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेट्स द माइग्रेशन एंड इंस्टिंक्ट टू माइग्रेट। ये इनकी इंस्टिंक्ट में है, ये इनकी पैदाइशी ये चीज इनकी अंदर डाली गई है। जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस के केस में सकलिंग ऑफ द मिल्क from the mothers that is feeding, the suckling is actually the instinct. There is nobody, कोई भी सिखाता नहीं है बेबी को, ये इंस्टिंक्ट में होता है। सो द इंस्टिंक्ट इज दैट इज इनबॉर्न कैरेक्टर। मेटाबॉलिक एस्पेक्ट, prior to the migration, fat deposition occur during the change metabolic process. This change metabolic condition provoke the migration. That is also very easy. Provokes, उसको compel करता है, उसको stimulate करता है कि migration करनी है, fat deposition हो जाती है जब। Now, what is the significance of migration? What is the beneficial effects? Migration protect the bird from the cold or the stormy weather. It protects the bird from the excessive heat. It provides long hours of the day for searching food, provides abundant food supply, suitable breeding grounds, right? That is also very easy कि breeding grounds उनको मिल जाते हैं और birds जो है वो beneficial रहते हैं इस मामले में कि वो मरते नहीं हैं अगर वो माइग्रेशन कर लें। A journey without rest is tiresome. आप कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं माइग्रेशन के। टायरसम हो सकती है जर्नी, स्नोफॉल और हैवी रेन की वजह से यंगस्टर्स मर सकते हैं। यंग एंड वीक बर्ड्स आर एक्सपोज टू वेरियस नेचुरल प्रेडेटर्स, एनिमीज, इलेक्ट्रिक एंड टेलीग्राफिक वायर्स। ये तो मेरे सामने एक बर्ड, रेनिंग हो रही थी और बर्ड मेरे सामने उसकी इलेक्ट्रिक करंट से डेथ हुई थी। सो देयर आर सो मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स व्हिच बिकेम द कल्प्रिट, मतलब हो सकता है कि वो इस हादसे का शिकार हो गए हों, ठीक है। द हंटर्स इन वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो किल अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और हंटर्स भी इस मामले में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज हार्मफुल। सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर यूजफुल, सम ऑफ देम आर हार्मफुल, लेकिन बर्ड्स जो हैं वो इसको माइग्रेशन को स्टॉप नहीं करते, राइट? दैट इज फॉर देयर नेस्टिंग, फॉर देयर ब्रीडिंग, फॉर देयर food, and for their survival also. Thank you. I hope you like the topic. I hope it is clear to you all. If there is any question, then you can ask from me, okay?